2020 and COVID brought everybody down to their knees. From governments to organizations to companies to corporates, NGOs and individuals, who not. So much so that everybody's plan A is out of the window. In comes 2021, where we restructure, rewire, refresh and reframe everything. Back to square one, back to the drawing board. In comes plan B. So here we are to discuss the first plan B of the nation, the union budget. तो गवर्नमेंट का इश्यू क्या है कि जो थिंग्स which are life saver, they are either tax free or at lowest tax 5%. So what you say and what you practice, there should not be any difference. If you think corona is very important, HIV is important, hepatitis B is important, TB is important, then you don't charge those kids at more than 5%. Either you give 0%, which was earlier, or any such thing which government thinks is a lifesaver. Government कुछ चीज बोलती है कि हम लोग को इसको प्रायोरिटी देना है. So corona is a top priority. But when actually coming to practice, it is not top priority. When they want to take money. See, private sector को regulation के लिए उन्होंने क्या करना चाहिए कि, for example, during corona period, first month all hospitals had some sympathy. Second month they had empathy or understanding. Third month they started taking a lot of money. So for everything we had to go to either High Court or Supreme Court or government and get regulation. The clothes should be sold at this cost. Masks should be sold at this cost. If you are before Corona, I was able to buy a box of 200 or 100 gloves for 200 rupees or 250 rupees. Today I cannot buy below 700 rupees because those मेरे पास माल इतना ही यही भाव है. There is no difference between a what you call manufacture process or labor you are paying or a raw material between 1 year before and today. This was Dr. Ishwar Gilada, who works at Unison Medicare and Research Center, and one of the few doctors we spoke to who expressed their wish lists as far as the union budget is concerned for the healthcare sector of India. Let's talk about the first one, Smart Health Card. स्मार्ट हेल्थ कार्ड एक ऐसा सेंट्रल डेटाबेस हो सकता है इंडिया का जिसका अभी सही टाइम है. स्मार्ट हेल्थ कार्ड इज लाइक योर आधार कार्ड, जो एक सेंट्रल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के तहत ये इंश्योर करेगा कि आपकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री कैसी रही है, आपको पहले कितने रोग हो चुके हैं, अभी कितने हैं और आगे किस तरह के रोगों के चांसेस हैं. This makes the doctor's job very easy on the kind of prescription they give you whenever you fall sick. You go to the doctor, you show your smart health card, and on the basis of your past medical history, the doctor will advise you or give you prescription which is more effective rather than giving you a prescription which is based on the real time basis. स्मार्ट हेल्थ केयर कार्ड सिस्टम का इस वक्त टाइम सही इसलिए है क्योंकि डेटाबेस मैनेजमेंट की फैसिलिटीज इस वक्त इंडिया में बढ़ रही हैं एंड द आधार कार्ड के आने के बाद जिस तरीके से आपका बैंक अकाउंट लिंक है वैसे ही आपका स्मार्ट हेल्थ कार्ड भी लिंक हो सकता है एंड इट मेक्स थिंग्स वेरी इजी. इफ कोविड हैज गिवन अस समथिंग, if COVID has taught us something, then that is the importance of real-time data, importance of data. तो इसलिए स्मार्ट हेल्थ कार्ड इज वेरी इफेक्टिव टूल इन सॉल्विंग फ्यूचर हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया एंड इन डिटरमाइनिंग व्हाट इज द एवरेज हेल्थ ऑफ द कंट्री. Number 2, regulation of private healthcare. Now, recently, when COVID vaccines have been announced, the government of India has made the supply side very critical. Only restricted government authorized centers are allowed to vaccinate and to take the vaccines from Serum Institute of India or the Bharat Biotech. At the same time, the government has allowed import and export of these vaccines. कहने का मतलब यह है कि मुंबई में अगर एक प्राइवेट हेल्थ केयर सेंटर है वो पूना जाकर के दवाइयां नहीं खरीद सकता है, उसको जाके फॉर एग्जांपल अगर सेरम ने लंदन एक्सपोर्ट किया है तो दे विल डायरेक्टली गो टू लंदन एंड इंपोर्ट दोज मेडिसिन फ्रॉम लंदन. This will eventually raise the cost of the COVID vaccine for the private sector individuals or people operating outside the ambit of the private sector. We need to ensure, the government needs to ensure that the COVID vaccine is available throughout all the centers and not only government appointed centers. If they import the medicines from London, they will effectively sell it to the consumer at a very high cost. उससे कोविड वैक्सीन के दाम बढ़ेंगे. गवर्नमेंट को अभी ये चाहिए कि वो सिर्फ कुछ चुनिंदा गवर्नमेंट ऑथोराइज सेंटर्स के तहत नहीं बल्कि दे शुड इन्वॉल्व द प्राइवेट सेक्टर इन द डिस्ट्रीब्यूशन, ऑथराइजेशन एंड प्रॉपर वैक्सीनेशन ऑफ द मेडिसिन. This also includes the Epidemic Act.
एपिडेमिक एक्ट का मतलब यह होता है कि जब भी कोई कोरोना जैसा एपिडेमिक आपके देश को हिट करे तो प्राइसेस should be regulated. If the people operating in the sector do not operate under the ambit of this price control mechanism, they can be fined according to the Epidemic Act. आपको याद होगा कि कोविड की कुछ किट एक टाइम पे 1500 में मिलती थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट में फाइलिंग्स करने के बाद अब 450-300 रुपए में आ गई है। मेडिकल इक्विपमेंट्स और मेडिकल इंडस्ट्री, खासकर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, इस बात का बहुत फायदा उठाती है कि डिमांड जब एकदम से किसी प्रोडक्ट की बढ़ती है तो वो उसको स्टॉक कर लेते हैं, एंड एज अ रिजल्ट द प्राइसेस स्काई रॉकेट। ऑल्सो द इंक्लूजन ऑफ एपिडेमिक एक्ट which will regulate the private sector effectively. The price control mechanism can be established in the market, जिससे होगा ये कि मैन्युफैक्चरर से लेकर के रिटेलर से लेकर के डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स तक, there will be a fixed mechanism on the prices, there will be a cap on the prices. तो ताकि सडनली जब डिमांड बढ़े किसी एपिडेमिक के तहत कुछ इक्विपमेंट्स की या कुछ किट्स की, तो उनके प्राइसेस एक्सॉर्बिडेंटली हाई ना हो पाए। नंबर 3, लाइफ सेविंग किट्स या लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स पे टैक्सेस आर मोर देन 12% ऑन सर्टेन आइटम्स। फॉर एग्जांपल ट्यूबरक्लोसिस, कोविड, HIV, all the essential kits for all these diseases are taxed at more than 12%. It is imperative for the finance minister to understand that these equipments are considered to be life-saving equipments. So, इनका rate of tax should be either less than 5% or 0%, so that it is available at a cheaper cost to the general public. Number 4, enhancement of medical colleges in India. We have very few medical colleges in India. The number ranges between 500 to 600. Out of these 500 to 600 colleges, the government seats are less than 25%. As a result of which, most of the seats in the private sector are exorbitantly high. आपने मेडिकल स्कैम्स के बारे में सुना होगा, जहां पे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए लोगों को बहुत ज्यादा ब्राइब देनी पड़ती है। जब ऐसे स्टूडेंट्स महंगे मेडिकल कॉलेजेस से निकलते हैं तो जाहिर सी बात है, दे डू नॉट वांट टू गो एंड सर्व द कम्युनिटी, serve the poor community, because they do not pay well. As a result of which, India loses its best doctors either to foreign countries or they are taken by big corporate hospitals which charge exorbitantly high money. इसका सबसे बड़ा नतीजा होता है कि अच्छी हेल्थ केयर सिस्टम आम हिंदुस्तानी को अवेलेबल नहीं होती है। So we need to solve the problem from the roots. We need to ensure that the number of medical colleges in India and especially the government colleges, the seats are enhanced. तो इससे हमको अच्छे डॉक्टर्स मिलेंगे। So this was the wish list from the healthcare sector. We will try explore wish list from the other sectors in the coming days. Stay tuned to Plan B.